Hi guys, good evening. It's 5th of September and here I am with my another video on the ancient history. And in this video I will be covering a brief about the basics of ancient history, like how the evolution of human being took place, and after that we will talk about the civilizations, main civilizations, and among all of these civilizations we will discuss in depth we will discuss in depth for about we will discuss the Indus Valley civilization in depth, and the rest three will be just a brief intro, like what they were all about. So, starting with the ancient history, let me give you a few few insights. These are not these are the assumed one, because we all know that we can't give an exact or the accurate date of origin when the earth was formed. So these all are assumed on the basis of certain calculations. So origin of earth is 4.8 billion years back, and when we say the life came around 3.5 billion years back, and the human got existed the existence of human came on earth on around 4.2 million years back. And there is a person who is known as father of history, and he is Herod, Herodotus. Herodotus is the father of history. And when we say about the source of history, how am I going to explain all of these things to you? So they have been identified on basis of two evidences. The first one is the literary part, like all the authors, the historians, all those who have written the books around the history topics, and the other is the archaeological part. So we will be covering both of them. So now coming to the evolution of human being, when we are talking about the ancient history, so how the human beings got evolved. So we have classified that state uh, into three parts. The first one is Paleolithic, then after that there comes Mesolithic, and after that there is Neolithic. And the Paleolithic ranged from 5 lakh BC to 10,000 BC. So 5 lakh years back to 10,000 years BC. So Paleolithic is the a only time period tenure which covers the maximum part, and it is also called Old Stone Age. So all these age which I told you, Paleolithic, Meso, and Neo, they all are Stone Age only. But Paleo is called Old Stone Age, Meso is Middle Stone Age, and Neo is New Stone Age. And in all of these years, as you can see that Paleolithic ranges from 5 lakh to 10,000. So there have been a major development in that period as only. Uh, so in all these three ages, we have seen evolution, how the human brain got developed. So coming to the Paleolithic is a basic raw age, and it has also been divided into lower Paleo and upper Paleo. And during that age, the humans, we can't generally say humans to them, they were like monkeys, only chimpanzees. They used to have stone tools, we can say, and they were not even a tool. They were just a stone with some. You would have seen the stones with the sharp edges, right? So they used to use. Use those stones only for their daily needs, and the daily needs were mainly for the food or like chopping part, right? Because they weren't that sharp to cut something, so they were only used for chopping things. And there comes Mesolithic. Mesolithic ranges from 10,000 to 6,000 BC, and in that period, we have seen there has been some transmission from that raw stone to some finished stone. They started giving them some shapes, right? And at that time, wood also came into the picture. They started combining the wood with the stone, like a hammer kind of thing. But still, they were not that fine. But with that, they started hunting
they started hunting, gathering crops, not crops, they started hunting, and they started fishing as well. And fire also came into the picture, uh, not that extensively, um, but in a very minute way, right? And then there comes Neolithic. Neolithic ranges from 6000 to 1000 BC, and this I can say, as compared to the past two ages, this was the advanced one, most advanced one, I will say. So in that, pottery came into the picture. They realized the importance of things to hold something, So they started making potteries, and agriculture came into the picture, right? And the Mehergarh is in Balochistan, so it's a main example of that, because Balochistan is called the breadbasket of Mehergarh. Sorry, Mehergarh is called the breadbasket of Balochistan. Uh, they started doing agriculture, started rearing the animals, and in the Neolithic age only we started to see the settlements. And after that, and after this evolution part, we will jump into the civilization. So civilization is a part of Neolithic age only. So yeah, in the Neolithic axes were used, and yeah, in this age the weapons got sharper as compared to the past two ages. And along with the Neolithic age, there was an age called Chalcolithic age. It ranged from 4500 BC to 3500 BC. It was going simultaneously along with the Neolithic. And Chalcolithic has been derived from two words. Chalco means copper plus lithic means stone. So it's a copper stone age, you can say, and it is called copper stone age because during that period the copper came into the picture. Copper was discovered, and the most of the equipments were being made out of copper only. And in some areas the bronze was also used, but copper was in the mode in a protagonist manner. Hmm. And after this, now we will come, and this was the basic about the evolution of human being. Now we'll come into the civilizations part. So during the Neolithic period only, mid Neolithic, after the middle part, what we say, after the second, we can say it in a second half. It ranges from 6000 BC to 1000 BC. So on a second half part, the civilizations came into picture, and during that time there were mainly four civilizations which were going on around the world. First one is the um, Mesopotamia, and the Mesopotamia generally at that time was a region of Iran and Iraq, mainly in Iraq, you can say, uh, and in Iraq was a Sumer region. So basically, whenever we talk about Mesopotamia, we take Iran and Iraq in a collective way, and it was also a region of Sumer, as I told you. So in that region, in the Mesopotamia, it is where it is located. It is located in Iran and Iraq, and the settlements at that time, even in today's time, the settlement always used to be like embarked on the banks of a river, because we all know, and at that time also they realized the value of water, matter of survival. So they used to settle around the banks of rivers. So Mesopotamia was established around the two rivers, that is, those are Tigris and Euphrates. Yes, Tigris and Euphrates, and the language was Sumeri. And what they were known for? They were known for their arithmetic, literary, and uh, astronomy. They were good in all these fields, and um, they were, yeah. And the Mesopotamia was replaced by Akkadian civilization after after thousands of years after. They came as another civilization called Akkadian civilization, and they replaced the Mesopotamia. So this was all about Mesopotamia. Then the second comes the Egyptian civilization. As the name suggests, as the name tells, it
It was established in the Egypt around the Nile River, and the main it is known for, like, the Egyptian civilization is known for the agriculture. They had a very rich soil because of the Nile River, and they have the one of the biggest evidence the Egyptian civilization has is their written system. They have a proper the evidence has been obtained by the archaeologists around the written system the Egyptian civilization used to have, and it was called hieroglyphics. Hieroglyphics, and in the Egyptian civilization, the rulers used to spend. They were quite thriving. They have good money, so they used to build big monuments, as you have seen all those mummy structure pyramids as a symbol of their power, right? And the third one is the Chinese civilization. Chinese civilization, there is nothing much to discuss about Chinese civilization. It has been established on the banks of the Yellow River. It is also called the Mother River, and it is also known as the cradle of Chinese civilization. Cradle is generally, जैसे आपने देखा होगा बच्चों को जिसमें रखा था झूला टाइप का जो होता है, चारों दीवार से बंद, चारों जगह से बंद होता है. So it's a cradle. So it is known as that river is also known as the cradle of Chinese civilization. Now comes the main Indus Valley civilization, and interestingly, it's a very interesting one. You will get to know a lot of facts about it. And in the Indus Valley civilization, I'll give you a few like main brief facts about it, important facts, and after that we will jump into the main 12 sites of Indus Valley civilization, because Indus Valley civilization in itself is also a very large part. I'll tell you about how much it covered from where to where. So Indus Valley civilization, mainly the language was there wasn't any specific language. There weren't any oral words, no, neither the written words as well. So they used to communicate through picture signs. So the language is pictograph, and infrastructure. The main infrastructure was citadel. Citadel is mainly a fortified area. It's kind of a killa only, which where the thing used to happen is what used to happen was the the rich people, or we can say the upper class, used to live on those higher establishments. The citadel was like a raised, elevated area, a large, big area. So that was citadel, and there was a lower area as well where the normal people used to live. Citadel and large granaries. Indus Valley civilization is known for that as well. Trade, the main trade was with the Mesopotamia. Sumer and the Mesopotamia currency, they were quite thriving. They have good amount of gold, silver, copper and bronze, but they didn't have iron at that time, and they used to worship nature. With nature I mean to say, like the fire, Agni, people tree, bull, Pashupati. The archaeologists found some seals where there is something called Pashupati, and उसको देख के मतलब generally archaeologists figured out that it might be Shivji, but there is no specific evidence. So they called it Pashupati Mahadev. And the one other thing is they used to worship the genitals of males and females, because they had a belief that the organs through which a new one is being born is worth of worshipping, is worth of worship. So they used to worship genitals. And the last ceremonies generally used to happen in a burial way only. But when we will talk about the Mohenjo-daro, in Mohenjo-daro there were 3 ways of last ceremonies. So first one is the complete burial. They used to completely bury the dead person. The other one is a fraction burial, where what they used to do, they would let's say if somebody has died, they left him in the open field, let the vultures and the decomposers feed upon it, and then they used to bury it. So it's a fractional burial. And there was another one. The last one was the post cremation. In the post cremation, they used to cremate the body, जलाते थे, उसके बाद उसको वो दफना देते थे.
ठीक है। और जो मोस्ट कॉमन सील थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में वॉज अ यूनिकॉर्न, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द humpless bull. So, kind of a bull with if you have seen unicorn, so you can simply say unicorn only. Just an easy way to understand, easy way to make people understand that humpless bull, right? And now if we talk about the area of Indus Valley civilization. Indus Valley civilization uh, was spread from was scattered, not scattered, was spreading, was uh, was ranging from Jammu and Kashmir, and at that time it was called Kundalwan, from Jammu and Kashmir. The north to the south is to the Maharashtra. In Maharashtra there is a place called Demabad, till Demabad, and on the west it was from Balochistan to Meerut, Uttar Pradesh. And Demabad was the most populated region in the Indus Valley civilization. Now coming to the famous sites which have been excavated in the IVC. Often I'll use the term IVC acronym, which means Indus Valley civilization. Okay. So the first one comes. There are main 12 sites. The first one is the Harappa. And let me give you even I was confused. Many people like me are often confused that what they often think that Harappa is a different civilization because people address it in a way like Harappan civilization, Mohenjo-daro and all. So let's let me make it easier for you. That Indus Valley civilization. Let's take Indus Valley civilization IVC as a country, and Mohenjo-daro, Harappa, Lothal, Ropar, these all were different states, right? Okay, kind of states. So Harappa was the first site to be excavated. It was excavated in 1921. It is situated uh, in the Montgomery, area in Punjab, the Punjab of Pakistan, the Pakistan wala Punjab, around the Ravi River in 1921, and excavated by uh, D.R. Sahani, Dayaram Sahani. एंड जो मेजर फाइंडिंग्स थी वो थी मेजर फाइंडिंग्स थी कॉफिन मिले थे प्यूरियल के, और बहुत बड़ी ग्लेनरीज मिली थी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ग्लेनरीज के लिए फेमस था इंडस वैली सिविलाइजेशन. फिर आता है आपका मोहनजोदारो सबसे ज़्यादा लेविश और फैसिलिटेटेड साइट थी. वो सबसे ज़्यादा मॉडर्न साइट थी, सबसे मॉडर्न साइट थी पूरे आईवीसी की, और लार्जेस्ट सिटी थी आईवीसी की. साइट और सिटी में फ़र्क है. साइट इज़ अ बिगर टर्म, और सिटी उसका एक छोटा सा पार्ट है. साइट के अंदर बहुत सारी सिटीज़ आ जाती हैं. तो ये सबसे मॉडर्न साइट थी और एक लार्जेस्ट सिटी थी. ठीक है. और मोहनजोदारो सिचुएटेड है सिंध एरिया में, पाकिस्तान में. कौन सी रिवर कह रहा हूँ? सिंधु. इंडस का पुराना नेम सिंधु था. और ये डिस्कवर हुआ था 1922 में. 1921 में हड़प्पा था, 1922 में मोहनजोदारो था, और इसका एक्सकेवेशन करा था आर.डी. बनर्जी, रखालदास बनर्जी. और इनमें जो मेजर फाइंडिंग्स थी वो थी आपकी, एक ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल थी, उसकी स्टैचू थी, और बियर्डेड प्रीस्ट थे, जो कि एक शिमला ट्रीटी भी थी जो पाकिस्तान के पास चला गया है वो स्टैचू. उसके बाद हमारे पास ग्रेट बाथ टब था एक, उसकी पिक्चर्स वो एरिया मिला आर्कियोलॉजिकल साइट्स में. ग्रेट बाथ टब था, ग्रेट ग्रेनरीज मिली हैं, टॉयज़ मिले हैं, हिडन ड्रेनेज मिला है, और पशुपति सील है, बुल की सील है, और टेराकोटा टॉयज़ हैं. तो काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेटेड साइट थी. और मेनली ब्रॉन्ज बहुत यूज़ होता था एंटायर आईवीसी में. उस टाइम ब्रॉन्ज का काफ़ी यूज़ था, जैसे कि ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल्स का एग्जांपल है. ठीक है. उसके बाद आता है हमारा मोहनजोदारो के बाद थर्ड साइट है हमारी चानूदारो थोड़ा फैशन साइट ज़्यादा थी. चानूदारो सिचुएटेड है वो भी सिंध में, पाकिस्तान में, अराउंड सिंधु रिवर, इंडस. और ये डिस्कवरी इसकी हुई थी 1931 में बाय
गोपाल मजुमदार एंड मैक्री, ये दो एक्सकेवेटर थे। और इसमें मेनली फाइंडिंग्स जो थी आपके यहाँ, बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली थी, बीड जो माला पहनते हैं, बीड था। और यहाँ पे ब्लैक लाइनर मिला है, लिपस्टिक मिली है, और कॉम मिली है। तो आप मतलब समझ सकते हो कि उस एज में हम बात कर रहे हैं अभी 6000 से 1000 BC के बीच में जो न्योलिथिक एज चल रही थी, उस बीच में ये सब सिविलाइजेशन आई हैं। तो उस टाइम फैशन का तब से था, और फैशन तब आ सकता है जब आपको बेसिक नीड्स पूरी हो चुकी हैं, तभी आप कुछ उसके अलावा सोच सकते हैं। तो मोहनजोदारो थोड़ा एडवांस चल रहा था बाकी साइट्स के अकॉर्डिंग, एज़ कम्पेयर टू बाकी साइट्स। तो सॉरी, चानूदारो, चानूदारो मोहनजोदारो आसपास में ही है। तो ये था चानूदारो, मेन ये आइटम थे फैशन लिपस्टिक वाले जो मैंने बताया। उसके बाद चानूदारो के बाद आता है फोर्थ हमारा चानूदारो, चानूदारो हाँ, चानूदारो का रोपड़। रोपड़ आपका पंजाब आ जाता है। रोपड़ पंजाब में है, सतलज के सतलज नदी के पास में। और इसका डिस्कवरी हुआ था 1953 से 1955 चला। YD शर्मा ने एक्सकेवेटर थे, यज्ञदत्त शर्मा। और रोपड़ में मेनली जो हमें फाइंडिंग्स थी, रोपड़ में थी हमारी, हाँ रोपड़ में मिला था, जब एक्सकेवेशन हुआ तो उसमें मिला था एक डेड बॉडी के साथ में एक स्केलेटन मिला था। स्केलेटन था एक ह्यूमन बीइंग का और साथ में एक कुत्ते का। तो माना जाता है कि उन दोनों को साथ में बरी करा था, अब रीज़न कुछ भी हो सकता है। फिफ्थ है ढोलावीरा, ये कच्छ गुजरात में है। और RS बिष्ट थे, उन्होंने इसका एक्सकेवेट करा, RS बिष्ट ने। इसका ईयर है 1968। रिवर आ जाती है आपकी घाघर, घाघर रिवर है कच्छ गुजरात में। ये वहाँ पे ढोलावीरा है, ढोलावीरा। और बचा क्या इसमें फाइंडिंग्स, ढोलावीरा की फाइंडिंग्स में ढोलावीरा, हाँ ढोलावीरा की फाइंडिंग्स में हमें जनरली मिला है टेराकोटा के टॉयज। उसमें ये था कि बुलक कार्ट थी जिसे नेकिड मैन चला रहा है, नंगा आदमी से चला रहा है, तो वो खिलौना है, वो मिला था। उसमें हमें वहाँ पे ईंट मिली है कंस्ट्रक्शन की, और वेल्स के लिए जो ईंट यूज़ हुई थी वो मिली है। ड्रेनेज सिस्टम उनका भी अच्छा था, ड्रेनेज सिस्टम पता लगा, ठीक है। और इतना पता था कि वो लोग बुलक्स वगैरह रखते थे फॉर लाइवलीहुड, मेनली प्लोइंग वगैरह, खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर तो आ चुका था, ग्रीनरीज थी काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और उसके लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जानी भी जाती है, ठीक है। हम 5 हो गए ढोलावीरा। उसके बाद 6 हमारा आएगा, मैं याद किया अप्रैल 7, 6 हमारा आता है लोथल। लोथल आपका है अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात में। और ये रिवर है थोड़ी, इसका नाम भोगवा, भोगवा है अहमदाबाद गुजरात में, भोगवा रिवर है। और ये ट्रिब्यूटरी है साबरमती की, ठीक है, साबरमती की है। और गल्फ ऑफ खम्बात भी है। भोगवा रिवर जो है इसमें साबरमती रिवर की ट्रिब्यूटरी, और गल्फ ऑफ खम्बात लगता है वहाँ से। तो ये इसलिए सबसे बड़ा डॉकयार्ड था IBC का, क्योंकि वहाँ से ट्रेड होता था मेसोपोटामिया के लिए, है ना। और इसकी डिस्कवरी हुई थी, इसकी डिस्कवरी हुई थी 1955 से 1962, ठीक है, 1962। और रंगानाथ राव इनके एक्सकेवेटर थे, रंगानाथ राव। और फाइंडिंग्स यही थी कि सबसे बड़ा डॉकयार्ड था पूरे IBC का। और ट्रिपेजॉइड शेप में होता है। ट्रिपेजॉइड एक काइंड ऑफ ट्रिपेजियम जैसा ही होता है, ट्रिपेजॉइड शेप था। और यहाँ पे बीड मेकिंग फैक्ट्री यहाँ भी मिली थी, हाँ यहाँ पे बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली थी, पेंटेड जार मिले थे। और हाँ, और यहाँ पे पता लगा था कि राइस का कल्टीवेशन होता था सबसे पहले, अर्लीस्ट कल्टीवेशन ऑफ राइस का एविडेंस मिला था, राइस के कण मिले थे, ठीक है, राइस का पता लगा। और एलिफेंट के दांत मिले हैं, एलिफेंट के दांत मिले हैं। बटन सील मिली है, बटन सील होती थी काइंड ऑफ जिसमें ठप्पा मारते हैं, बटन सील होती, ठीक है, वो मिला था। और हाँ, और एक मैं आपको बताना भूल गया था, चानूदारो को लैंकशायर ऑफ IBC बोलते थे। और लोथल को मैनचेस्टर ऑफ IBC भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कॉटन का प्रोडक्शन ज़्यादा था। लैंकशायर और मैनचेस्टर ब्रिटेन में है, और वो एरिया सबसे ज़्यादा कॉटन की फैक्ट्रीज हैं, कॉटन का प्रोडक्शन था, इसलिए इसको यहाँ का लैंकशायर चानूदारो को बोलते हैं, और मैनचेस्टर लोथल को बोलते हैं। और हाँ, लोथल में आपको चेस बोर्ड भी मिला था, तो इससे पता लगता है कि ये लोग गेम्स वगैरह भी खेलते थे, चेस बोर्ड मिला उस टाइम के हिसाब से।
तो हमारी 6 जगह हो चुकी हैं। लोथल का 7th हमारा आता है कालीबंगा। कालीबंगा, काली मतलब ब्लैक, बंगा मीन्स बेंगल। ये कालीबंगा आपका मिला है श्री गंगानगर राजस्थान में। और इसकी रिवर यहाँ पे आती है घाघर, ठीक है। ऊपर तो भोगवा थी, भोगवा ट्रिब्यूटरी साबरमती की, और खमजात गल्फ में, खम्बात गल्फ सॉरी। तो कालीबंगा का तो रिवर घाघर ही है, घाघर। और ये मिला था 1961 में, 1961 में था। इसके एक्सकेवेटर थे दो लोग थे, हाँ ये हैं ब्रिज बसीलाल और एंड बालकृष्ण थापर। ब्रिज बसीलाल एंड बालकृष्ण थापर ने कालीबंगा का एक्सकेवेशन कराया था, कब 1961 में। और यहाँ पे मेनली फाइंडिंग क्या थी, जैसे बेंगल का पता लगा है, चूड़ियों का पता लगा, शायद यहाँ पे चूड़ी की फैक्ट्री थी। और कालीबंगा बहुत नॉन प्लान्ड सिटी थोड़ी, उतने अच्छे से प्लान नहीं था। तो यहाँ पे मिला है आपका बेक्ड एंड बर्न बेंगल्स मिली हैं, ठीक है। और कोयले मिले हैं, फायर एल्टर्स काफ़ी बड़े बड़े, शिवलिंग मिला है, और कैमल की बोन्स मिले। तो वो कहा जाता है कि शायद वो थोड़ा मे बी ब्लैक मैजिक या ऐसा कुछ करते होंगे, कैमल की हड्डियाँ मिली हैं। 7th ये हो गया। 8th हमारा आता है बनावली। बनावली बनावटी नहीं है, बनावली है। बनावली है मुझे एक जगह भी याद नहीं आ रहा। बनावली पाकिस्तान में, सॉरी, बनावली फतेहाबाद हरियाणा में है, फतेहाबाद। और ये मिला था 1973 में, 1973। इसका भी एक्सकेवेशन RS वेस्ट ने करा है, जो कि उस धोलावीरा का भी RS वेस्ट ने करा है। लेट मी चेक, हाँ धोलावीरा का भी RS वेस्ट ने करा है 1968 में। और ये बनावली हुआ है 1973 में। और ये नदी है घाघर, सेम बनावली घाघर नदी के किनारे है। और इसमें एक्सकेवेशन में मिला है मेनली एविडेंस की यहाँ पे बार्ली था। बार्ली होता है आपका जौ बाजरा होता है ना, जैसे जौ होता है, तो बार्ली जौ होता है, तो जौ मिला था यहाँ पे। और मूर्तियाँ मिली हैं, मूर्ति नॉर्मल जैसे यहाँ पे वो मिला है कि टेराकोटा के खिलौने। उसके बाद हमारा आता है बनावली के बाद है बनावली हमारा हो गया 8th। 9th आता है लरकाना। बनावली के बाद लरकाना। लरकाना आपका लरकाना डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब पाकिस्तान में। ये मिला था 1963 सॉरी, लरकाना था 1922। हाँ, लरकाना और मोहनजोदारो का एक्सकेवेटर दोनों सेम है, RD बनर्जी, रखालदास बनर्जी, ठीक है। लरकाना लरकाना है, बनावली के बाद लरकाना है, मुझे भी याद करना पड़ेगा। 9th है लरकाना। और लरकाना में मेनली फाइंडिंग्स ये थी कि बार्ले ही मिला है यहाँ पे, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। RD बनर्जी और लरकाना डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ नदी है सिंधु, इंडस, ठीक है। इसके बाद हमारा लरकाना के बाद आता है 10th आता है, ये थोड़े नेम थोड़े कंफ्यूजिंग से हैं लरकाना। राखी गढ़ी, लरकाना और राखी गढ़ी 10th है। 10th राखी गढ़ी। राखी गढ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि लार्जेस्ट सिटी मोहनजोदारो थी, ठीक है। राखी गढ़ी लार्जेस्ट साइट है, ये हिसार हरियाणा में है। और नदी इसमें भी घाघर आती है, हिसार हरियाणा। और इसका एक्सकेवेशन हुआ था, डिस्कवरी हुई थी 1963। और इसके एक्सकेवेटर थे प्रोफेसर सूरज भान, ठीक है। प्रोफेसर सूरज भान ने राखी गढ़ी की एक्सकेवेशन करी थी 1963 में। और यहाँ पे मेनली मिले थे टेराकोटा के टॉयज़, मूर्तियाँ, फिगरीन्स मिली थी, पॉटरी मिली थी, ठीक है। मेनली ये था। बस इसके मेन जो याद करने वाली चीज़ है राखी गढ़ी बनावली आता है। फिर आता है आपका लकराना। बनावली 8th है, 9th लकराना, 10th है राखी गढ़ी। लकराना राखी गढ़ी ना, नेम थोड़े कंफ्यूजिंग से हैं, और हैं भी 12th तो थोड़ा वो चैलेंजिंग हो जाता है। बनावली, लकराना और राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी मेनली फेमस है क्योंकि साइड बहुत बड़ी है हिसार में, बहुत बड़ी है।
तो ये 1963 में इसकी डिस्कवरी। फिर 10th हमारा आता है आलमगीरपुर। ये मेरठ में है आलमगीरपुर। और यहाँ मेनली जो चीज़ मिली थी आलमगीरपुर में, मेन जो चीज़ मिली थी वो है कपड़े मिले थे, कपड़ा मिला था एक तरीके से, इम्प्रेशन ऑफ क्लोथ। तो एग्जैक्ट कपड़ा तो नहीं मिल पाएगा लेकिन क्लोथ मिला था और थोड़ा वीव्ड फॉर्म में था, तो इससे पता लग रहा है कि उनको वीविंग आती थी। और नदी मेरठ में नज़दीक हिंडन पड़ती है, ठीक है। और इसके ये वाई डी शर्मा, हाँ, इसके एक्सकेवेटर भी वाई डी शर्मा थे। और वाई डी शर्मा हमारे वाई डी शर्मा रोपड़ रोपड़ के भी वाई डी शर्मा एक्सकेवेटर हैं पंजाब में जो है। हाँ, वाई डी शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा, वाई डी शर्मा आलमगीरपुर के भी एक्सकेवेटर हैं। और इसका एक्सकेवेशन डिस्कवरी है 1958, हाँ सही है। 1963 में आपका राखी गाड़ी था, और 1963 राखी गाड़ी था, और 1958 आपका आलमगीरपुर है जो 11th जगह है मेरठ। और 12th हमारी आती है, ये भी थोड़ा नेम अलग सा है, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। नदी यहाँ पे आती है दस्त दस्त बोलते हैं, और वहाँ के लोग दश्त बोलते हैं, DASHT। और इसका नाम है सुतका गेंदोर, सुतका गेंद, SUTKAGEN, सुतका गेंद DOR डोर, सुतका गेंदोर। ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और इसका एक्सकेवेशन 1927 में वहाँ था, डिस्कवरी हुई थी। और इसके एक्सकेवेटर थे RL स्टीन। और ये बिगेस्ट पोर्ट है, ये सबसे बड़ा पोर्ट था। और ये ट्रेड करते थे मेनली, बेबीलोन भी बोलते हैं, और मेसोपोटामिया या ईरान इलाका बोलना चाहो तो वो था ट्रेड पॉइंट यहाँ से, क्योंकि सबसे बड़ा पोर्ट सतका गेंदोर था। सतका गेंदोर थोड़ा अलग सा कंफ्यूजिंग सा नेम है। सतका गेंदोर सबसे बड़ा पोर्ट था और ट्रेड पॉइंट था। इसका डिस्कवरी हुई 1927 में बाय RL स्टीन, ठीक है। और नदी इसकी दश्त है। सो दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो। हाँ, काफ़ी लंबी वीडियो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, बाय।